से राधे राधे। आज मैं लौकी के कोफ्ते बना रही हूँ। आज मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का, तो इसकी रेसिपी मैं बताती हूँ आप सबको। अभी तो मैंने लौकी को कट कर लिया है। कट करके मैं इसे घीस ली हूँ। देखिए इसे मैंने घीस लिया। घीसने के बाद इसको सारा पानी इसका ऐसे निकाल के, ये मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे करके, ठीक है। ऐसे पानी को घीस, पानी में से इसको निकाल के इसका सारा पानी ऐसे निकाल देंगे, इसे रख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमें इसे सबको ऐसे ही कर लेना है। अब मैं घिया को इसमें डाल रही हूँ बर्तन में। वैसे तो लौकी कहते हैं, घिया भी बोलते हैं हमारे में। अब मैं थोड़े से धनिया पत्ता, मैंने 2 हरी मिर्च काटी है, वो भी डाल दिया। और इसमें जिंजर पेस्ट भी डाल दी, गार्लिक जिंजर पेस्ट, अदरक का पेस्ट है, अदरक लहसुन का। और अब इसमें मैंने 1 गिलास बेसन, नमक, गरम मसाला, ये मैं अपने स्वाद अनुसार डाल रही हूँ। आप सब अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यह है धनिया, लाल मिर्च, मुझे थोड़ा चटपटा खाना है। यह है अजवाइन। थोड़ा सा और हल्का, ठीक है। अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, फिर मैं इसे फ्राई करूँगी।